So our next topic is chapter 3 subject verb agreement. So पिले माने बहुत समय ये जिनसा बहुत बहुत important जे subject verb agreement कौन पाए थाए. For example, okay, so let's start your chapter 3 subject verb agreement. Okay, देखो दीटा एग्जाम्पल देजी. Grandmother was praying and telling her beads. The sparrows were not chirping. In the verb 1 was praying, but in the verb 2 were chirping. So why is it so? So पिले माने कौन हुए देखो बहुत समय when we talk about present tense, past tense and future time. Okay, तो ये गोटे कथा देख पे like I go, okay, but when it comes he, the third person singular, it becomes he goes. Or when it is he and Ramesh, he and Ramesh, एटी कौन है पे देख सब्जेक्ट वर्तमान किए ही गले ही एंड रमेश से एवं रमेश. सो माय सब्जेक्ट बिकेम प्लूरल ओवर हियर से एवं रमेश. वर्तमान एमाने एक वचन नुहे बहुवचन हो गले. तेणु जो सब्जेक्ट जो मोर बहुवचन हो गला सब्जेक्ट सहित भर्बटा मध्य सेही फॉर्म रे रहिबा दरकार. दिस इज व्हाट योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन प्रेजेंट टेंस. देखो मु लिखिली आई गो एबे sorry आम ये लिखुले कौन he goes. This is correct, but when it become he and Ramesh, now the subject become plural. So he and Ramesh, now it becomes go. गोटे एग्जांपल देली प्रेजेंट टेंस रे. देखो पास्ट टेंस रे सेमिति like I was playing, but when it becomes he and I, or let it be, let's take any name, Ramesh and I. पिले बहुत जगह एमती लिखाई जाई था बही रे बहुत जगह देखिबो ए भूल जिनसडा रहिछि लिखाई थिबो रमेश एंड मी. नो, मी शब्दर माने होउछि मोते, मी शब्दर माने मु नुह. तुम्हें कौन कहब रमेश आउ मु खेलुथिलु ना रमेश आउ मोते खेलुथिलु. यू नो इट साउंड्स क्वाइट रॉन्ग. रमेश आउ मु खेलुथिलु. तेणु रमेश एंड आई, नाउ द सब्जेक्ट बिकेम प्लूरल इन द पास्ट फॉर्म. तेणु वाज एंड वेयर बोथ आर इन पास्ट फॉर्म, बट द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाज इज वेयर. सो रमेश एंड आई वेर प्लेइंग. Ramesh and I were playing. जमीती देखो आउ गोटे से लेट अनदर एग्जांपल. Ramesh is playing. किंतु जिते बेले एटा में प्लूरल फॉर्म नहीं जिबा रमेश एंड भूपेश. Let it be any name. So Ramesh and Bhupesh, now they become plural. So Ramesh and Bhupesh are playing. Okay. So पहले कौन हुए एग्जैक्टली ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रे सब्जेक्ट रो सिंगुलर बा प्लूरल को नहीं करी ऑक्सिलरी बा हेल्पिंग वर्ब मध्य बदलिबा आरंभ करे. सी हियर दिस बिकम्स गो. एठी आमर ऑक्सिलरी देखो चेंज हो गला थिला रमेश इज प्लेइंग. एठी ऑक्सिलरी थिला इज, एठी गला रमेश एंड भूपेश आर प्लेइंग. सो वर्ब वेदर मेन वर्ब और वेदर helping verb, it changes as per the number of subjects. So देखो पिले पेज नंबर 23
तुम गोटे टेबल से दे लाइक आई एम इन द स्कूल हॉल तापर देख लिखी वी यू दे और द स्टूडेंट्स ऑल आर इन द प्लूरल फॉर्म एंड इन डिफरेंट पर्सन्स आर इन द स्कूल हॉल ही सी इट गोपाल रानी द टीचर all are I'm talking about the third person singular तृतीय पुरुष आ एक वचन कथा गोटे मनीष बा गोटे वस्तु बा गोटे नारी पुरुष कथा कहा जाउची so he see it Gopal Rani the teacher is in the school hall they are all singular entities the teacher and the students देखो the teacher कहले जणे किंतु the students छात्र माने तेणु एक रु अधिक हो गले सेटा एकाधिक हो जाए जहाँ को आम प्लूरल कहू एंड प्लूरल पाई ऑक्सिलरी 100% चेंज हुए सो द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल हॉल द काउ इट्स ग्रास गाई घास खाए द काउ ये कौन है पिले द काउ एटी काउ को गोटे कम्युनिटी बा काउ को गोटे ग्रुप बा काउ को गोटे जाति हिसाब से देखा जाए गाई घास खाए कौन गोटे गाई ना सबू गाई तेणु आपको एज अ होल आम कनसीडर करेचे द डेफिनेट आर्टिकल यूज करके आम कनसीडर करेचे सो द काउ नाउ इट बिकम द थर्ड पर्सन सिंगुलर द काउ इट्स ग्रास किंतु देख लिखला काउज गोट्स एंड शिप तीनटा प्राणी को आम जिते जोड़ी देले से माने कौन है गले दे बिकेम प्लूरल आ प्लूरल पाई भर्बर रूप मध्य बदली जाए सो काउज गोट्स एंड शीप इट ग्रास सो देख पिले से कथा गुड़ाक आम केतेटा एग्जाम्पल रे देखिबा ताकि ठीक रे बुझी परिबा आउ टिके डिटेल रे मोर एग्जाम्पल्स कले तुम्हें जानी परिबो कारण कथा होची कौन पिले बेले बेले आम टेंस बदलौचे आउ बेले बेले नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मध्य बदलौचे बालक टी खाऊची आउ बालक माने खाउछंती तेणु कथा होची टेंस बदलिबा सहित सब्जेक्ट रो सिंगुलारिटी और प्लुरालिटी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म मध्य बदलुची सेथि पई गुडे रूल्स ऑटोमेटिकली एठी जनरेट होची लेट्स सी 1a verbs used after an introductory there have to agree with the noun which is called the real subjects coming after them there is a book on the desk so there is कहि परिबी बा there was कहि परिबी डेस्क ऊपर बहिटे अछि बा थिला बट जते बेले सेटा बुक्स हो गला there are or were 4 books on the desk चारोटी बही टेबल ऊपर अछंती बा थुआ होइछि कहले आर थिले कहले हे गला where when it is used listen it is a pronoun for the neuter when it is used in the normal subject position to make a statement about time distance or weather the verb is always singular that is or was जते बेले भी पिले माने आमे समय दूरता बा पाणीपाग विषय कहू आमे इट टा को व्यवहार करू आमे कौन कहू इट इज रेनिंग ता माने कोन एहा वर्षा हेउची ना वर्षा होउची इट्स अ नेचुरल फेनोमेनन ओके तो एई गुडा क पई न आमे कौन करिबा इट को यूज करिबा आ सब बेले आकू आमे सिंगुलर हिसाब रे कंसीडर करिबा यही तीनटा सिचुएशन पाई इट को व्यवहार तो करिबा ता सहित आकू सब बेले सिंगुलर हिसाब रे आमे ट्रीट करिबा कोन देखो लिखाई जी इट इज 10 past 12 लिखाई देखो इट इज 10 past 12 ओके सो पिले माने ये गोटे छोटिया कथाटे कहबी बोध हुए यहाँ बहुत कम स्टैंडर्ड तुम्हें स्टैंडर्ड 3 और 4 रे पढ़ी हाउ टू एक्सप्रेस टाइम इन इंग्लिश आम बेले बेले भारी इनफॉर्मल वे रे कहू 3:56 सो व्हाट शुड आई थिंक दिस 3:56 मिनिट ना 356 सो सेइंग 3:56 इज नॉट द प्रॉपर वे टू नैरेट टाइम ओके तेणु 3:56
आपको कौन कहबा पिले देख when it crosses half an hour, this is hour, this is minute, so when the minute approaches 30 or beyond 30 we should target the next hour. तो आउ 4 मिनिट हेले केतेटा हबो 4टा हे जीवो तो आमे कहि परिबा it is 4 minutes बा सिंपली कहि परिबा it is 4 to 4, it is 4 to 4 4टा बाजिबा को आउ 4 मिनिट अछि तेणु 3:56 whether AM or PM आपको आमे कहि परिबा it is 4 to 4 बोले ठीक सेमिति देखो लिखा है इट इज 10 past 12 ता माने 12:10 12:10 को कौन कहबा इट इज 10 past 12. नो नीड टू से इट इज 10 minutes past 12 hours एटा कहबा बिल्कुल जरूरी नाही. ठीक सेमिति 12:15 को कौन कहबा 12:15 कहबा इट इज 15 minutes past. नो 15 मिनिट टा हेगला क्वार्टर 4 भागरु भागे इट इज quarter past 12. सेमिति 12:30 को कौन कहबा दिस इज हाफ पास्ट, हाफ एन आवर भी कहबा दरकार नहीं, दिस इज हाफ पास्ट 12. ठीक सेमिति 12:45 को एटा जानी थाओ पिले गोटे एटा मध्य गोटे ग्रामाटिकल कॉन्सेप्ट सेति पे मु ए कथा को नरेट करूची. 12:45 आमे जते बेले देखिले ता माने आउ गोटे क्वार्टर आउ 15 मिनिट हे गले केतेटा हे जिवो घंटे हे जिवो माने गोटे हे जिवो. तेनु आमे आकु कोन लिखि परिबा दिन एकटा हो जीवो तेणु आम आपको लिखिपर कौन बोले ना इट इज quarter-to-1, इट इज quarter-to-1. ओके आउ माने अध घंटा क्रॉस करी गला पिले देखो घंटा को देखो थरे हैला अध घंटा क्रॉस करी गला परे सबु बेले आउ देखिबो आउ केते समय हेले परवर्ती घंटा आसी जीवो. जेमिति कि 3:56 हेची 3:56 को मु कोन कहली कि दिस इज 56 past 3. नो नेक्स्ट आवर अध घंटा नो मिनिट जते बेले अध घंटा बा ताटू आगु को चली जाए सेते बेले हमें नेक्स्ट आवर को टार्गेट करू. तेणु आउ 4 मिनिट हेले दिन 4टा बा राति 4टा हे जीवो सेति पे मु कहली इट इज 4 to 4. आउ 4 मिनिट हेले दिन 4टा बाजिबो. देखो लिखा है इट इज और वाज 2 miles टू द बीच. इट इज और वाज रेनिंग हेविली. तेणु समय दूरता और पाग पाणीपाग को जिते बड़े आम वर्तमान काल बा अतीत काल रे एक्सप्रेस करूँ सबते बड़े आम सेंटेंस रे सब्जेक्ट रखिबा इट को आउ ताकू कंसीडर करिबा सिंगुलर बा एक वचन हिसाब रे. नाउ रूल नंबर 2 when a plural number applies to distance, time, weights or amounts of money and represents a single figure or quantity, it is treated as a singular and takes a singular verb. 100% जो सब्जेक्ट को जदि आम सिंगुलर हिसाब रे ट्रीट करिबा ताले सी इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. से सिंगुलर वर्ब ग्रहण करिवो. देखो 50 kilometers is not a long distance in these days of rapid travel. आजिर जुगरे जोठी मनीष आ मनीषर चिंता चेतना द्रुत वेग आगे चली 50 किलोमीटर किसी गोटे बड़ डिस्टेंस नुहे. सो 50 किलोमीटर्स आपको आम कौन करवा एक वचन हिसाब रे कंसीडर करवा. 50 किलोमीटर दूरता किसी बड़ कथा नुहे. पिले देखो ये गोटे बढ़िया आउ गोटे एग्जांपल टे दउची लिखा है तुम्हें मन कर परिवार फैमिली तार बहुवचन है फैमिलीज. गोटे सेंटेंस को देख माई फैमिली मो परिवार इट्स ए कलेक्टिव नाउन. एटा गोटे कलेक्टिव नाउन गोटे समूह नाउन को माई फैमिली लव्स द फूड. वर्ब देखो को फॉर्म नहीं थर्ड पर्सन सिंपल प्रेजेंट. माई फैमिली लव्स द फूड आई कुक. लव्स द फूड आई कुक. मु प्रस्तुत करुवा खाद्य मो परिवार पसंद करे. तुम्हें जदि भाव पिले परिवार बापा माँ भाई भौणी दादा खुड़ी एमान समस्त को लेकर बोध हुए 6-7 जनर कथा हो गले एटा प्लूरल हो गला
No, this is a collective noun. India is our country. आमे कौन भाविबा ना इंडिया गोटे 130 कोटी बा 150 कोटी लोकंकर भूखंड, तेणु यहाँ प्लूरल. नो, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन. सो माय फैमिली, थर्ड पर्सन सिंगुलर आई कंसीडर हियर, लव्स द फूड आई कुक. देख से भाई किसी अच्छी 60 years इज अ लॉन्ग टाइम. 60 वर्षर अवधि बा समय, एक दीर्घ समय. 2 kilos of tea cost 600 rupees. ओके, 2 किलो चार मूल्य 600 रुपीज, 600 टंका पड़े. सो 2 kilos ऑफ टी, अगेन आपको गोटे कलेक्टिव नाउन हिसाब से निगला. 5 rupees इज नॉट अ बिग सम. 5 टंका गोटे बड़ अर्थ राशि नुहे. सो 5 rupees, अगेन दिस इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल सब्जेक्ट, singular subject, and for that it takes singular verb. So एबे देखो रूल नंबर 3. If two nouns joined by and are regarded as a single object or notion, the verb is singular. Okay, देखो पहले केमती ना दीटा एक वचन. If two nouns are joined by and regarded as a single object or notion, दुईटी वस्तु को एकत्र करा जाए एंड को व्यवहार करिके, किंतु तांको जदि ग्रहण करा जाए एक हिसाब रे, ताहाले मध्य हमें सेठी सब्जेक्ट भर कौन आसीबो, सिंगुलर ही आसीबो. केमिति देखो, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट. ब्रेड एवं बटर मोर मनपसंदर जलखिया. तेणु ब्रेड एंड बटर को अलग अलग नुहे, आम एकाठी खाऊ. यही जो खाद्यटार जो कॉम्बिनेशनटा मोर भारी पसंद. सो दिस इज कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. सो ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट वुड बी रॉन्ग, व्हेयरएज ब्रेड एंड बटर इज करेक्ट. ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अगेन देख, ट्रूथ आ ऑनेस्टी ताको कंसीडर करा जायछि गोटिए. Curry and rice was his favorite food. Again combined noun. ठीक सेमती पिले गोटे प्रोवर्ब सुनी थिबो, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस. स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस. एटा मध्य कलेक्टिव हिसाब रे निया गला, गोटिए ताको कंसीडर करा गला. एबे देखो बीट 3 रो 3 नंबर बिट बी. इन अदर केसेस टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड मेक द टोटल सब्जेक्ट प्लूरल. तो बाकी केस गुड़ाक कौन हुए, बेले बेले गुड़े सब्जेक्ट को आम जॉइन करूँ, किंतु ताकू आम प्लूरल हिसाब से ग्रहण करूँ. जिते सब्जेक्ट को देख पिले गोटे सिंपल कथा, सब्जेक्टा को जदि आम प्लूरल हिसाब रे ग्रहण कले तापे प्लूरल भर्ब यूज करिबा. सब्जेक्ट जदि सिंगुलर अच्छी ताहले सिंगुलर भर्ब ग्रहण करिबा. आउ सब्जेक्ट प्लूरल थिले बी एंड यूज करूचे, प्लूरल थिले बी जदि सब्जेक्ट को आमे गोटिए जिनस हिसाब रे ग्रहण करिबा, जेमति थिला ट्रूथ एंड ऑनेस्टी. ट्रूथ कोटे इज अ नाउन, honesty it's a noun. Anything that has a name is considered as a noun. But when I combine them like truth and honesty, I consider them as a one package, as a one package, so it become singular. So truth and honesty is the best policy. तबे आमे बर्तमान ए फॉर्मूला को आसी जिबा. in other cases two singular or plural subjects joined by and make the total subject plural, which takes a plural verb. Quite natural. If the subject is plural, it will take a plural verb. Now see, Gopal and his sister have come. Okay पिले एटी को देखो गोटे बढ़िया रूल आज तुमको कहूची. देखला, Gopal and his sister have come. 2 boys and 3 girls have written their essays. So देखो लिखला पिले, Gopal and his sister have come. Okay. Gopal
and his sister. प्रेजेंट परफेक्ट रे लिखा है किंतु कथा ला गोपाल एवं तार भौणी. नाउ दे बिकम प्लूरल. आई कांट कंसीडर देम एज अ सिंगल. सो गोपाल एंड हिज सिस्टर. तेणु प्रेजेंट परफेक्ट रे आमे पिले कौन यूज करवा मन पकाओ. आमे गोटे फॉर्मेट लिखी थिले प्रेजेंट परफेक्ट रो सिंटैक्स कौन थिला ना सब्जेक्ट हैज और हैव V3. I have eaten, we have eaten, you have eaten. In the plural form you have eaten, they have eaten, but she or he has eaten. So Gopal and his sister, so this becomes plural. Then plural pai I'll choose the verb have, but Gopal has come, Gopal's sister has come, but when I join them, so Gopal and his sister, it takes the plural form and it becomes Gopal and his sister have come. तो पहले यही जिनसटा बहुत आगुरी कही सारी किसी नुआ कथा एथिरे नाही. एबे देखो 4 नंबर पॉइंटा कौन देला. अ कलेक्टिव नाउन in the singular may take the verb in the singular if the speaker thinks of the thing as a singular whole. If individual members of the collective noun are considered, the collective noun can take a plural verb. Mark the following sentences. Okay. देखो कौन दिला. The jury or the members of jury, okay, were divided in their opinions. Okay, the jury means the members of jury, the members of jury, विचारक मंडली. तेणु एठी सभ्य माने सेमानकर भिन्न भिन्न मतरे बांटी हेई गले. गोटाए जिनस को तो केबे बांटी हुएनी. आई नीड 2 or more. तेणु ये कौन है तो जूरी को आम कौन कनसीडर कले ना प्लूरल कनसीडर करके लिखिले द जूरी आउ सेथिपाई ऑक्सिलरी यूज कले वेर. एबे नेक्स्ट सेंटेंस देखो लिखा है द जूरी एटी सिंगल बॉडी हिसाब से कनसीडर कले जोटा ब्रैकेट भीतर भी लिखि देछि बही रे. सो द जूरी हैज सिलेक्टेड इट्स चेयरमैन. has selected single हिसाब से कनसीडर कली तेणु से ऑक्सिलरी यूज कली हैज. नाउ सेम देखो आउ गोटे बढ़िया एग्जांपल देछि. द कमिटी वाज अनएनिमस ऑन दिस इश्यू. द कमिटी वाज अनएनिमस ऑन दिस इश्यू. गोटे सिंगल यूनिट हिसाब से नहीं आम कमिटी. कमिटी माने कौन परिषद सभा गोटे परिषद जहाँ को आम को. किंतु सेकेंड सेंटेंस देखो द कमिटी वेर डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू. जिते आम इंडिविजुअल मेंबर कथा चिंता करूँ, इंडिविजुअल मेंबर कथा चिंता करूँ, ताकू पृथक पृथक चिंता करूँ सभ्य माने सेतेबेले ऑक्सिलरी आम प्लूरल फॉर्म रे नबा. तेणु लिखाला द कमिटी वेर डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू. एबे देखो 4 नंबर बी बिटा. सम नाउन्स लाइक पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, कैटल एटसेट्रा यूजुअली टेक द प्लूरल वर्ब्स. हाँ ये गोटे कथा कही दूची पिले बहुत गुड़े नाउन अच्छी जो माने सिंगुलर भी आउ जो माने प्लूरल भी. से गुड़िक एक वचन तांकर बहुवचन भी सैया. तेणु देख कितना एग्जांपल देछि जे सम नाउन्स लाइक पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, कैटल यूजुअली टेक देयर प्लूरल वर्ब्स. तेणु जार सिंगुलर जहाँ प्लूरल सैया तेणु आम साधारणतः ताकू प्लूरल फॉर्म रे कंसीडर करूँ. गोटे छोटिया उदाहरण पिले तुमे को लिखुचे यू, तुमे माने को मध्य लिखुचे यू. एटा सिंगुलर एटा प्लूरल किंतु आमे आप ऑक्सिलरी इन द पास्ट फॉर्म कौन यूज करूचे यू वेर.
तुमे थिलो कि तुमे माने भी थिलो तापे मध्य वेयर केबे भी पिले माने यू पाखरे वाज व्यवहार करिबो नाही व्हिच इज रॉन्ग एग्जैक्टली सही कथाटा एठी द पुलिस हैव नॉट मेड एनी अरेस्ट द पुलिस एठी कोन करा गला ना ताको प्लूरल हिसाब रे ग्रहण करा जायछि बोली प्रेजेंट रे तार ऑक्सिलरी हैव यूज करा जायछि द पीपल ऑफ इंडिया द पीपल माने कोन लोक माने पर्सन रो प्लूरल हैला पीपल द पीपल ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड अबाउट देयर स्पिरिचुअल वेलफेयर द पोल्ट्री हैव बीन फेड प्लूरल द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड गाई समूह बा जंतु समूह चरुछंती सो द कैटल दिस इज कंसिडर्ड एज प्लूरल फॉर्म नंबर 5th द नाउन्स क्लॉथिंग food furniture stationery cutlery crockery jewelry scenery usually take singular verbs okay pile stationery items ना हमें को स्टेशनरी सुनो कटलेरी क्रॉकेरी ज्वेलरी सीनेरी तो यही सब गुड़ा को सिंगुलर वर्ब रे आसे तेणु पिले स्पेसिफिकली यू मस्ट रिमेम्बर कौ गुड़ाक साधारणतः आमे ताकू प्लूरल फॉर्म रे मने करू आ कौ गुड़ाक सिंगुलर फॉर्म मने करू तो लिखला हिज क्लॉथिंग इज वेरी अट्रैक्टिव फूड इज नेसेसरी फॉर लिविंग The furniture needs to be repaired. आसबाब पत्र पिले फर्निचर मान है आसबाब पत्र तुम भाव हाँ टेबुल चेयर स्टूल दिस ऑल आइटम्स बोध एगुड़ाक प्लूरल ना आसबाब पत्र या सिंगल हिसाब से ग्रहण करा जाए से सिंपल प्रेजेंट लिखाई नीड्स I consider them as third person singular. So the furniture needs to be repaired. Then stationery is sold in this shop. It has stationery is sold बिक्री करा जाए. So stationery I consider this as singular. Okay. So वर्तमान पिले देखिबा तुमर एक्टिविटी 1 एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उपरे तुम बही रे ऑल टोटल केतोटी 16टा रूल अछि तो किछि किछि रूल पढ़िला परे गोटे गोटे एक्टिविटी मझिरे मझिरे इनसर्ट करिछि तो वर्तमान आम जो 5टा रूल्स बा मोर दैन 5 रूल्स आम देखिले ता उपरे वर्तमान एक्टिविटी गोटे करिबा सो प्रथमे आसीबा पेज नंबर 25 एक्टिविटी 1 तो एठी पिले केवल तुमको कोटा सिंगुलर कोटा प्लूरल आउ बेले बेले कहा सिंगुलर ग्रहण करा जाए आउ बेले बेले कहा प्लूरल ग्रहण करा जाए बस सेतिकी तुमको आइडेंटिफाई करने को पड़िबो। एक नंबर ए कौन कही चूज द करेक्ट वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस ओके तेणु जो वर्ब बा मोस्टली हेल्पिंग वर्ब बा ऑक्सिलरी देछि तार करेक्ट फॉर्म आमे से सब्जेक्ट पाई बाहर करवा तेणु सब्जेक्ट सिंगुलर न प्लूरल बस सेतिकी जदि आइडेंटिफाई करदेल यू आर डन। तो नाउ सी देयर इज प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज अनेक गुड़िए सुजोग गोटे कि दीटा सुजोग नुह अनेक गुड़िए सुजोग 100% this becomes plural. So there is plenty of job opportunity नुहे there are plenty of job opportunities is the correct one. Second bit there was or were plenty of room for improvement in her work. Okay, so there was plenty of room वाच को आम यूज करिया प्लेंटी ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट गोटे कथा कह जाउची सिंगुलर कथा कह जाउची 2 + 2 2 एवं 2 केते हुए 4 हुए ये जो 4 आउटपुट टा पाइले 100%
एटा गोटे सिंगुलर कथा एक रो कथा कह जाउछ गोटे निर्दिष्ट रूप तार अछि गोटिए जहाँ को आम कहू तेणु 2 + 2 is 4 I must not consider 4 as plural okay 1,52,765 is a big amount for a poor person each संख्यार विशालता को देखिकी ताकू बहुवचन कह जाई परिबो नाही ओके so 2 + 2 is 4 D देखो 2 toes एटा कोन हो ना 2 toes are 4 एबे देखो बिट E ओके तो बिट C आ बिट D भीतर रो डिफरेंस है एटा जे 2 toes 4 एटा प्लूरल फॉर्म रे आसी गला 2 toes 4 2 toes सिथि आर 4 ई देखो 70 kilometers are or each a long distance so 70 kilometers each a long distance F देखो fish and chips dash is not so expensive as chicken curry and rice okay so fish and chips is not so expensive again I consider this as a collective noun so fish and chips is not so expensive but one bit G देखो a crowd माने कौन पिले गहली तेणु गोटे गहली को आम भाबा बहुत गुड़े लोक ना generally this is considered as a single so a crowd has gathered in the street गोटे गहली सेठी जमा होई छी the assembly was or were divided on this issue okay the assembly विधान सभा okay were divided on this issue because here we consider the different parts of the noun भाग भाग हे गले से माने so the assembly were divided on this issue then the bit I the police each or are chasing the burglar so this must be the police are chasing the burglar the J bit her clothing each or are waterproof her clothing is waterproof एटी क्या गुड देखथिले ना the nouns clothing food furniture stationery cutlery crockery jewelry scenery usually take singular verbs okay so activity 1 in this way this is finished so वर्तमान देखो page number 26 as I told you that there are how many more than 16 verbs okay 16 rules regarding the subject verb agreement so now see page number 26 and the rule number 6 if a clause separates the subject from the verb it is necessary to remember the actual subject word and to make the verb agree with it कौन कहला पिले if a clause separates the subject from the verb गोटे वाक्यांश कौन करूची पिले सब्जेक्ट को कौन करूची verb रु अलगा करि दउची ताहाले यह आमे मन रखिबा जरूरी जे to remember the actual subject word वास्तविक रे सब्जेक्ट किए आमे ताकू मन रखिबा जरूरी and to make the verb agree with it आमे कहिचे पिला गुरु verb जदि singular it takes singular verb and if verb is plural it takes plural verb very simple all the example देखो all the books which have been placed on the table are mine
देखो all the books लिखिला all the books. I think this is not visible to you people. Yes, now it is visible. देखो लिखला all the books समस्त बही which have been placed on the table, which have been passive form रे अछि बोले which have been placed on the table are mine. Possessive pronoun. तेणु all the books जो गुड़िक की रखा जाए which have been placed on the table, you know this is in the plural form. से समस्त बही गुड़िक मोर अटंती. So I am choosing the plural form of the auxiliary. So all the books which have been placed on the table are mine. The radio which you gave my children works perfectly. The radio which you gave my children. पिले गोटे कथा मने रख गिव परे गोटे गिव होचे भली गोटे स्वतंत्र शब्द जहाँ परे प्रेपोजिशन लाइक टू केबे भी बसैबो नाही. फॉर एग्जांपल ठीक सेमती कॉल गोटे वर्ड जहाँ परे कौन सी प्रेपोजिशन बसैबो नाही. आई कॉल और आई कॉल्ड यू केबे टू यू लिखिबा नाही. आई गेव रमेश तार अर्थ कौन मु रमेश को देली. नेभर से आई गेव टू रमेश केबे भी लिखिबा नाही. तुम देखो लिखिला द रेडियो व्हिच यू गेव माय चिल्ड्रेन. सही रेडियोटी जहाँ तुम मोर पिला मानन को प्रदान करिथिल वर्क्स परफेक्टली. सही रेडियोटी. द रेडियो मीन्स इट्स सिंगुलर. आ जते बेले सब्जेक्टटा सिंगुलर द लागिछि माने गोटे डेफिनाइट आर्टिकल. तेणु द रेडियो फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर इन सिंपल प्रेजेंट द रेडियो वर्क्स. बट द रेडियोज जदि अनेक गुड़िए रेडियो थांता ताहले वी वुड चूज द वर्ड वर्क परफेक्टली. सो नाउ द बीट नंबर 7. Not beat number 7, it's just like your rule number 7. So first beat is the rule is how many? Okay, the rule number 7 has been divided into four points like A, B, C, D. So A says that if a subject begins with either or, neither of, or none of, followed by a plural noun or pronoun, the verb is usually singular. Okay, आमे आगु पढ़ीचे either or एटा किंबा सेटा. किंतु कौन देखला पिले देखो कहला either of, neither of, none of. ओके ए गुडी को सबु बेले आंक पई सिंगुलर वर्ब बसे पिले. सबु बेले सिंगुलर वर्ब बसे. देखो either of the boys has got a prize. Okay, either of the boys has got. So get, got, and sometimes in get, got, in some old writings you may find the V3 as gotten. Yes, but nowadays this is not in use. But if you see somewhere it is written like I have gotten, that one is not wrong. Okay, so generally you write get, got. So either of the boys,
से दुईटा पिलांक भितरु ये किंबा सीए तेणु इदर ऑफ जदि आम यूज कले आमको बस मन रखा पड़ो जे यही सब वर्ड्स गुड़ाक आम जदि गोटे भी या परे परे देख या परे परे गोटे प्लूरल नाउन लिखा अच्छी इदर ऑफ परे दी बॉयज लिखा अच्छी थिले मध्य एटी वर्ब को आम सिंगुलर कंसीडर करिबा सो इदर ऑफ द बॉयज हैज गॉट अ प्राइज इदर ऑफ द बॉयज हैज गॉट अ प्राइज नीदर ऑफ देम हैज कम केही भी तांको भितरु आसी नाहंती केही भी तांको भितरु आसी नाहंती तो लिखिला neither of them them is in the plural form so neither of them has come 100% this is past participle so neither of them we consider this as singular and the auxiliary for the singular is has none of the students has arrived yet like ओके एबे देखो each of one of usually take singular verbs पुणी पिले कौन कहले देखो each of one of प्रत्येकटी तांका भितरु बा one of जणिए तांका भितरु प्रत्येक बा तांका भितरु जणिए each of one of etc usually take singular verbs each of प्रति एक पिला में कहने प्रति एक माने ये सी जदि जणे 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 आमे कंसीडर करिबा तेणु ईच ऑफ और वन ऑफ दिस ऑलवेज टेक द सिंगुलर फॉर्म सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन अ प्राइज छात्र मानक भितर प्रत्येक को गोटे गोटे प्राइज बा उपहार दिया जाई थिला सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन अ प्राइज one of the girls was able to answer the question correctly one of the girls झियो मानक भितरु जणिए विषय रे कुआ जाउची in past form so one of the girls was able to answer the questions correctly पिले एठी गोटे कथाटे मु ऐड करिया पय चाहिबी ए सेंटेंस रे कोन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहिची तमे निजे कहइबो he is one of my friend इटा पिले भूल हुए तो ठीक लागुथो he is one of my friend no we always select one thing or one entity or object from a group of objects से मोर जणिए सांग किंतु मोर एक रु अधिक थिबा सांग बा मोर सांग मानक भितरु से होउची जणे so he is one of my friends ओके पिले गोटाए जिनस को आ बाछिबा कोन बाछिबा पई मिनिमम एकाधिक दरकार ना तेणु ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स सांग मानक भितरु से जणे आ से पई मु ऑक्सिलरी यूज कली इज एंड दैट्स ऑल नाउ बीट सी 7 number rule ro bit C if no or some is followed by a singular noun it takes a singular verb okay जदि no किंबा some परे गोटे singular noun आसे आमे ताकू singular verb हिसाब रे ग्रहण करू if it is followed by a plural noun it takes a plural verb पिले कथाटा को टिके टेक्निकली बा मैथमेटिकली मु लिखि दउची केमती देख जदि नो किंबा सम केही नुह बा किछि नो और सम इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन जदि सिंगुलर नाउन आसिला ताले इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब कौन बा सिंगुलर वर्ब whereas if no or some is followed by प्ले इज फॉलोड बाय कौन सी क्लिष्ट शब्द नुहे मु तुमको कही एक्स फॉलोड बाय वाई एक्स फॉलोड बाय वाई यार माने हला एक्स परे वाई आसे एक्स परे वाई आसे बा एक्स परे परे वाई
So if no or some is followed by a plural noun, then we take a plural verb. It takes a plural verb. Okay. देखो, no child has done his homework. ओडिया रे में कहू केही भी कौन सी छुआ भी निज होमवर्क करी नाहंती, तो लिखले नो चाइल्ड. नो परे मो सिंगुलर नाउन को व्यवहार करछि, चाइल्ड हुज प्लूरल फॉर्म इज चिल्ड्रेन. सो नो चाइल्ड यूज कली, तेणु कौन है पिले सिंगुलर वर्ब यूज कली हैज. सो नो चाइल्ड हैज डन हिज होमवर्क, बट नो चिल्ड्रेन हैव डन देयर होमवर्क. नो चिल्ड्रेन कि कौन सी भी बालक माने निजर होमवर्क बा सेमानकर होमवर्क करी नाहंती. सम वाटर इज लेफ्ट इन द पॉट. सम वाटर इज लेफ्ट इन द पॉट. सम परे मु वाटर को सिंगुलर हिसाब रे नैची, तेणु सम वाटर इज लेफ्ट. आई चूज द ऑक्सिलरी इज फॉर दैट. सो सम वाटर इज लेफ्ट ऑन द पॉट, sorry, in the pot. It is inside something, so the preposition must be in. When it is on the surface of something, okay, it will gote बढ़िया grammatical mistake रो कथा कहूची. My name is in the list. My name is in the list. सेंटेंस टा सुनिबा को बहुत सहज लागुची, जे नाही से कहबो सेंटेंस ठीक अछि. My name is in the list. My name is in the list. बिल्कुल कौनसी एटा कंपाउंड सेंटेंस बा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नुह, किंतु लिखाई छी माय नेम इज एपर्यंत ठीक अच्छी, किंतु इन ठी भूल गला, कारण तालिका बा लिस्ट एटा होची गोटे टू डायमेंशनल सरफेस. आई एम राइटिंग इन द ब्लैक बोर्ड और ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑन द ब्लैक बोर्ड, किंतु वी हैव बीन प्रोग्राम्ड. बहुत समय लोक एमती भूल कही दियंती इन द लिस्ट. योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट. इन हला भितरे, लिस्ट होची कागजर गोटे मसृण बक्ष, गोटे हूँ गोटे समतल जगह, गोटे टू डायमेंशनल जगह. तेणु माय नेम इज ऑन द लिस्ट, नॉट इन द लिस्ट. कौन सी सेटा गोटे क्लोज्ड कंटेनर नुह जे ता भितर कहबी इन, बट आई एम इन हाउस. समटाइम्स से आई एम एट हाउस, ता मध्य ठीक अछि. सो सम गर्ल्स हैव गॉन ऑन अ पिकनिक. सम गर्ल्स, एबे देख पिले सम परे इधर नो और सम परे वर्तमान कौन नेले आमे प्लूरल फॉर्म नेले. सम प्लूरल फॉर्म गर्ल्स, तो प्लूरल फॉर्म ने भी कौन हैज, तो बिल्कुल ने भी नहीं, बिकॉज दिस इज द प्लूरल नाउन. सो आई विल टेक द प्लूरल फॉर्म व्हिच इज सम गर्ल्स हैव गन ऑन अ पिकनिक. तो लास्ट रूल देख पिले बिट नंबर 7 रो, when and connects two titles or designations of the person, the verb is singular. If the persons referred to are different, the verb is plural. देखो पिले ये जिनसटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे लिखी, अति सरल भाषा रे बुझे दूची, एटा को तुम ओडिया रे जदि पारिबो लिखि दियो. बेले बेले कौन हुए, ये गोटे कथा देख पिले, मने कर जी मोर गुरु सी ही मो बापा. बाबा मन कर मो बापा ही मो गुरु, किसी एटा असंभव कथा नुहे. तेणु मो बापा मो गुरु, मु दुटा नाउन जदिओ व्यवहार करुची, मनीष हिसाब रे बा लोक हिसाब रे से माने गोटिए. एबे मते गोटे कथा कह, मु कहली माय टीचर एंड माय डैड. माय टीचर एंड माय डैड has written. आउ लिखा है गोटे माय टीचर एंड माय डैड हैव रिटन. देख अति सरल भाषा पिले कहूँ, सेमती तो तुम बहुत गुड़ा रूल पढ़. ये पिले उभय सेंटेंस करेक्ट अटंती, सठिक अटंती. केमिति देख, जनरली आमे एटा को आमे देखो, माय टीचर एंड माय डैड हैव रिटन. सो दे आर डिफरेंट पर्सन्स, and using the conjunction and I'm joining them and I'm making a plural form. My teacher and my dad, this is the plural noun.
प्लूरल नाउन पाई मु हैव यूज करछि दिस इज ओके नो ऑब्जेक्शन बट व्हाट इज द न्यू थिंग अबाउट द सेंटेंस नंबर 1 my teacher and my dad has written I am choosing the auxiliary for a singular noun that means though I have used and they are one my teacher and my dad ता माने जीए मो बापा सीए ही मोर कौन टीचर भारी इंटरेस्टिंग कथा गोटे सेंटेंस भितर एते कथा अच्छी सो माय टीचर एंड माय डैड तो यही सेंटेंस रु बुझा पड़ जाऊँगी जे जीए मो बापा सीए ही मोर पिता सॉरी जीए मो शिक्षक सीए ही मोर पिता तेणु पिले केबे केबे जदि एभलिया सेंटेंस तमे एनकाउंटर करिवो जोठी तुमको लागुथिबो एटा गोटे प्लूरल नाउन किंतु तापे गोटे सिंगुलर वर्ब सिंगुलर ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब यूज करा हेची आ सेंटेंसटा भूल ना से जगह तमे भूल किंतु सेंटेंस ठीक तेणु माय टीचर एंड माय डैड माने जीए मोर टीचर सीए ही मोर डैड लेट मी गिव अ इक्वल सिंबल ओवर हियर माय टीचर एंड माय डैड दे आर द सेम पर्सन एथरे किछि विचित्र कथा नुहे प्रिंसिपल एवं मो बापा हुए तो मो बापा प्रिंसिपल भी हो पारती ओके तेणु यही टाइपर सेंटेंस गुड़ा को टिके भल भाव देखिबो Rule number 7 which has 4 beats A, B, C, D namely. So let's start from rule number 8. This is very important. It says that if the subject begins with a fraction, the verb agrees with the noun that follows the fraction. अर्थात गोटे fraction like 1/3, 2/5, 1/6 1/6 2/3 ये सब हूँ मैथमेटिकली फ्रैक्शन भग्नांश तेणु से कहूँ जदि गोटे सब्जेक्ट ये भग्नांश रु आरंभ हुए आम कहीपर 2 people 3 apples एमती आम कहीपर कि देख गोटे एग्जांपल लिखले 2/3 of the acid has evaporated 2/3 of the acid has evaporated पिले एटा गोटे अति सहजिया रूलटा से बहुत सर्ट रे भी देछि जिनसटा सो 2/3 ऑफ द एसिड देखो कौन कहला इफ द सब्जेक्ट बिगिन्स विथ द फ्रैक्शन द वर्ब एग्रीज विथ द नाउन द वर्ब हियर इज द वर्ब और सिंपली ऑक्सिलरी दैट एग्रीज विथ द नाउन्स कहार 2/3 ये जो एसिड जति भी हमर वॉल्यूम थिला एसिड थिला तार 2/3 कौन होइछि एवापोरेटेड हो जाइछि तेणु एसिडटा हैला हमर कौन सिंगुलर तेणु वेरी सिंपल जेहेतु नाउनटा सिंगुलर एसिडटा जेहेतु सिंगुलर आई कंसीडर दिस सिंगुलर तेणु तापाई सिंगुलर वर्ब हैज पुट करिचे एठी जदि जदि कोन एग्जांपल देछि ना पुनी गोटे देखो 2/3 2/3 ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन ऑफ द एप्पल्स सो APPLES एप्पल्स तो पिले मन देखो एप्पल्स आसीगला माने प्लूरल आसीगला तेणु गोटे प्लूरल रो 2/3 तेणु आप बर्तमान आम प्लूरल ऑक्सिलरी और लाइक आर रॉटन पची जाइए वेरी सिंपल आउ थे फाइनाली कहीदे जदि नाउनटा आमर प्लूरल है तापाई प्लूरल वर्ब नाउनटा जदि सिंगुलर है तापाई सिंगुलर वर्ब दैट्स ऑल सो ये तुमको पिले गला क्लास रे कहूली फॉर एग्जांपल पुलिस इनफॉरमेशन दीज आर प्लूरल बाय नेचर तेणु तुमको एक्चुअली बहुत समय एमती क्वेश्चंस आसे तुमको खाली मन रखा पड़ो जे कौ नाउन गुड़ाक प्लूरल भी आज वेल एज सिंगुलर भी यहाँ गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट कथा पे एत न जानी तुम भूल करदेव देन रूल नंबर 9A सो व्हाट डज इट से इफ द सब्जेक्ट बिगिन्स विथ a good deal of, a great deal of, a lot of, plenty of, most of तो अधिक मैग्नीट्यूड शो करने अच्छा खासा पहले गोटे हिंदी गोटे वर्ड अच्छी अच्छा खासा पैसा उसके पास है गोटे भल जिनस खूब बड़ क्वांटिटी रे बा अधिक क्वांटिटी देख तापाई ये सब जिनस गुड़ाक ये सब वर्ड गुड़ाक यूज होती अ गुड डील ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ प्राचुर्य बा बहुत अधिक most of some of etc the verb agrees with the noun that follows such
phrases. देखो गोटे एग्जांपल a lot of people. देखो एबे कहूथिल ना a lot of people. So person रो plural हैला people. तापर कहछि lot of people. 100% this is plural. This is plural. जदि plural या पई present tense रे मु are यूज करिवि, past tense रे were यूज करिवि, तो exactly सही आइछि. A lot of people were present in the meeting. A lot of people were present in the meeting. A lot of money was spent on buying clothes for the marriage ceremony. A lot of money was spent. Okay, so a lot of money, this is considered as singular. Totally phrase ta dekho, a lot of money, a lot of money. Okay, so this is considered as singular. Some of the students, these are physically separable or countable. I can say that student 1, student 2 and n number of students. Some of the students were intelligent. Some of the music was excellent. पिले माने again देखो, some of the music संगीत, तो आम संगीत को गणी पारिबानी गोटाए संगीत, दुईटा संगीत कि तीनटा संगीत. ओके, सो सम ऑफ द म्यूजिक. ओके, सो दिस इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर. सम ऑफ द म्यूजिक, किछि संगीत, सम ऑफ द म्यूजिक वाज एक्सलेंट. नाउ बी, phrases beginning with a congregation of, a crowd of, a flock of, a group of. एई पिले एई जो phrases गुड़ाक दौची 5टा 6टा 7टा गोटे गोटे रूल रे फ्रेज गुड़ा दौची, तो ये फ्रेज गुड़ाक एक्जाक्टली मन रखिया को पड़िबो, कारण दीज रूल्स आर कंसर्न्ड और दीज रूल्स आर रिगार्डिंग दीज फ्रेजेस. So a group of, a herd of, a regiment of usually take a singular verb in spite of the fact that the noun after of is plural. कौन कहला देखो, phrases beginning with a congregation of, a crowd of, a flock of, a group of, 1 2 3 4 चारटा, a herd of, a regiment of usually take a singular verb in spite of the fact that यह जानिथिबा सत्वे एही सबु फ्रेज गुडा को सिंगुलर बोली आमे कंसीडर करू. कोन जानिथिबा सत्वे ना द नाउन आफ्टर ऑफ इज प्लूरल. देखो मु जोटा आगुर कहउथली कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन. द क्राउड हैज गैदर्ड. क्राउड माने कोन, जनगहळ बा रुंड होइछंती. ओके, सो क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल. तो पिले पीपल पर्सन रो प्लूरल हैला पीपल, लोक माने, किंतु अ क्राउड ऑफ पीपल लोकंकर गोटे समूह. आमे कहिला बेले भी पिले ओडिया रे भी आमे एमती कहू, लोकंकर सेठी लोकंकर गोटे समूह गदा हेतला, गोटे कहू गोटे समूह सेठी गदा हेतिला. सो दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स. व्हेन वी से लाइक दिस, अ क्राउड ऑफ पीपल, इट कम्स अ singular thing. It may be larger in size. In the last class I told you that my family loves the food I prepare. My family, it may be a joint family having multiple persons, multiple family members. Like exactly in my family we are 6, in total. The head count is 6. So my family, it's a collective noun. So my family loves the food I prepare. Likewise, a crowd of people is considered as singular. So a crowd of people was shouting slogans. Sorry, a crowd of people was shouting slogans. So माने स्लोगन चिल्लाउथिले, स्लोगन दउथिले, हरताल करथिले. A herd of elephants, a herd of elephants was seen in the jungle. A group of smugglers, a group of smugglers. Smuggler माने कोन, anti-socials, चोरा बेपारी जो माने कहंती. A group of smugglers. Again देखो आउ गोटे कोन फ्रेज, a group, a group of, गोटे दल. फाइनली से गोटे वर्डटा को ही आम ओडिया यूज करूँ. तो अ ग्रुप ऑफ smugglers. If I use the past tense over here, then I'll choose was for this, because now a group of students becomes singular for me. So a group of smugglers was arrested yesterday. Now the last rule of bit 9, this is 9c. A number of
followed by a plural noun takes a plural verb, but the number of in a similar situation takes a singular verb as the real subject is the number. Rule ta out thre पढ़ुचे सुना. A number of followed by a plural noun माने a number of ता परे परे गोटे plural noun थिबो. गोटे देखिबा. A number of पिले आगुरु कहिछि x followed by y ता माने x परे y रो स्थिति बा x परे y आसे. a number followed by ता माने a number of परे लेखा हिछि कोन ए गोटे plural noun एठी किछि भी पारे. A number of followed by a plural noun takes a plural verb, but the number of in a similar situation takes a singular verb as the real subject is the number. देखो. So a number of children, a number of किछि पिला मान बहुत किछि पिला माने असुस्थ अछंती. A number of children, let it be 20, 30, 50, 60, whatever. A number of children are suffering from cold. A number of children are suffering from cold. पिला माने ए जो सेंटेंसेस गुडा का सब पढ़ा होची एक्जेक्टली सेंटेंसेस रो ओडिया मानेटा जदी जानि परिबो ताले आ रूलटा एमती स्पेसिफिकली तुमको बुझेबा को पड़िबो नाही. देखो न लिखा है अ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन किछि संख्यक. अ नंबर ऑफ माने होची किछि संख्यक वाटा को पहिले यूज करिया को पड़िबो. एटी से नंबर यूज करछि ना. सो अ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड. आई एम यूजिंग द प्लूरल. किंतु सेकंड रूल कौन कहूची द नंबर ऑफ सिक चिल्ड्रेन इज इंक्रीजिंग. बर्तमान देखो द नंबर ऑफ द सिक चिल्ड्रेन द नंबर ऑफ द सिक चिल्ड्रेन असुस्थ पिलांक संख्या बढ़िबा को लागिछि. इज इंक्रीजिंग. देखो असुस्थ पिलांक संख्या द नंबर ऑफ सिक चिल्ड्रेन एटा कोन सिंगुलर नो हेई एटा कोन हबो 50, 60, 30 और लेट इट बी x गोटे संख्या गोटे फिक्स्ड संख्या. व्हाट इज दैट? इट इज सिंगुलर. संख्याटा बड़ हो पारे. मु कहबी 50 थोड़ी ना कहबी 50 आर ग्रेटर देन 40. नो 50 इज ग्रेटर देन 40. लाइकवाइज this any number, any fixed number, simply it's a singular. So the number of children jehetu it is singular 50, 60, 80, whatever it may be 1 crore, a number is increasing because this is singular. So बर्तमान आम जहाँ पढ़ुचे पिले ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब भितर पुणी देख ये गोटे कथा कहीदिए ये सब मन रख. वर्ब हो गला तुमर मेन वर्ब. तो एक्जाक्टली टोटल चैप्टर आम कौनटा पढ़ुचे गोटे मेन वर्ब गोटे हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी. सो ये किसी कथा तुमको शिखिबार अच्छी कौन से कहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना सब्जेक्ट वर्ब. तेणु गोटे सब्जेक्ट मनकर स्टूडेंट तापाई मेन वर्ब कौन नेबी हेल्पिंग वर्ब कौन नेबी सेटा है कथा. आउ कहानी रे ट्विस्ट है कौन बेले बेले सब्जेक्ट सहित किसी फ्रेज लगिकी सी तार सिंगुलारिटी बा प्लूरालिटी को भी अफेक्ट करे. केमिति अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स है सिंगुलर सॉरी स्टूडेंट्स है प्लूरल किंतु अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये जो फ्रेज गुड़ाक यूज कली से सिंगुलर हो गला. 100% देख सिंगुलर सब्जेक्ट पाई सिंगुलर वर्ब आउ प्लूरल नाउन पाई प्लूरल वर्ब आम यूज करवा. तेणु आमको ये बस खाली देखिबार अच्छी जे एक्जाक्टली सब्जेक्टा सेपरेटली अच्छी ना कौन सी फ्रेज ता सहित कनेक्टेड होके अच्छी. आ तुम बही रे जो फ्रेज गुड़ाक देछि ए रेजिमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एगुड़ा को सिंगुलर नि जाए. तो यही फ्रेज गुड़ा को एक्जाक्टली तुमको मन रखा पड़ो. आ बहुत लिमिटेड फ्रेज भी देछि 4-5टा लेखे देछि. नाउ रूल नंबर 10 statistics, mathematics, physics, economics, news, mops, advice, information, jewelry, scenery, etc. are uncountable nouns.
देख हियर इज द एग्जांपल तो यही जो 10-12टा देइछि आकु तुमको मन रखिबा को पड़िबो फॉर एग्जांपल देख यू नो स्टैटिस्टिक्स आगु मु कहि सारी छि जेतेबेले तुमको आर्टिकल्स पढौथिली सेतेबेले कहि सारी छि ना इन्फॉर्मेशन जाको हम कहू तथ्य बा सूचना इन्फॉर्मेशन होची सूचना पिले यू नो तथ्य और सूचना भितरे डिफरेंस अच्छी डाटा यू नो समवट इट्स प्रोनाउंस्ड एज डेटा सो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन भितरे जो फरकटा जहाँ तथ्य और सूचना भितरे एक्जाक्टली सही फरकटा सही तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एज आई टोल्ड यू लाइक इन्फॉर्मेशन इज प्लूरल सो सिलेक्टिंग ए और एन फॉर इन्फॉर्मेशन इज क्वाइट रिडिकुलस एंड नॉनसेंस बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज प्लूरल एंड ए और एन तार माने होची गोटिए तेणु जोटा प्लूरल गोटिए पिला माने कहबाटा भूल हो ना तेणु केबे भी इन्फॉर्मेशन आगे ए किंबा एन यू मस्ट नॉट यूज दिस सो फिजिक्स is my favorite subjects the news was bad no information is available now okay तो यही सबू टर्म गुड़ाक यही सबू नाउन गुड़ाक होउची प्लूरल नाउन बा अनकाउंटेबल नाउन्स तुम आपको मन रखा ही पड़ो यू नो एडवाइस यू नो एडवाइस उपदेश आम कौन कहीपर कि केतेटा उपदेश नो दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन्स दे टेक singular verbs uncountable nouns but they take singular verbs the news was bad देखो लिखा है जी the news was bad so these are uncountable nouns information news jewelry scenery physics economics okay एगुड़ाक अनकाउंटेबल होते आमे तापाई सिंगुलर वर्ब यूज करिबा रूल नंबर 10 है सेतिकी प्रदत्त थिबा नाउन गुड़ाक अनकाउंटेबल होते भी सेमानक पई सिंगुलर वर्ब आमे यूज करिबा दैट्स ऑल सो नाउ पिले माने लेट्स स्टार्ट देन पेज नंबर 28 एक्टिविटी नंबर 2 पेज नंबर 28 एक्टिविटी नंबर 2 देखो कहला फर्स्ट बीट ईदर ऑफ द बॉयज बॉयज कही माने पिला माने यार कौन कही ईदर ओके तेणु कौन हम ईदर ऑफ द बॉयज तेणु ईदर टा पिले हमें सब बड़े यूज करूँ व्हेन वी सिलेक्ट वन आउट ऑफ टू ये किंबा सी देयर कांट बी यू नो मोर देन टू सो ईदर ऑफ द बॉयज ओन द मेडल ईदर ऑफ द बॉयज ओन द मेडल ईदर ऑफ द बॉयज डैश won the medal आमे जानिचे win जितिबा win on so 100% I have to consider this as V3 and either of the boys या भितरु ये किंबा सीए so this is considered as third person singular और third person singular पाई present perfect रे we use the auxiliary has किंतु जदि थांता बालक मैंने मेडल जीति the boys have won the medal but here either of the boys ये किंबा CA that's why we are choosing the auxiliary has for the third person singular present perfect neither of those officers ये नुहे कि CA नुहे again this is considered as आमे रूल पढ़ी सारीचे either of some plural noun or neither of some plural noun are always considered singular so neither of the officers is efficient one of his friends dash able to speak English fluently one of his friends सांग मानक भितरु जणे ए एग्जांपल टे म आगुर दे सारिची so one of his friends जनक कथा कुहा जाउची so 100% this is singular so one of his friends is able to speak English fluently then bit number D some honey dash left in the pot okay so some honey
is left in the pot. Some honey किछि मात्रा रे महू किछि महू पात्र रे किछि महू अवशेष अछि तेणु some is used but this is considered here as singular. Okay, then bit number, yes, the fifth bit. The governor and the chancellor of the university dash been invited to this function. Okay, the governor and chancellor of the university has been invited to the function. पहले ए रूल टाइ टिके आगुरु पढ़ी थिले जदि याको कौन करथांते अलग अलग लोक हिसाब रे जदि आमे ग्रहण करथांते एटा गोटे एक्स्ट्रा डॉट थांता पहले कहा आगुरु थांता या आगुरु थांता द गवर्नर एंड द चांसलर. द इज द स्पेसिफिक नाउन मु कहबी चांसलर जणे आ गवर्नर जणे 100% माने जणे जणे तेणु द जदि दीटा को नाउन पाखरे जदि द यूज हेई थांता एटा प्लूरल हेई थांता दटा दी जन पाखे व्यवहार हैनी तेणु टोटाल उपरे गोटे लोक कथा जड़े ही व्यक्ति विशेषक विषय रे कहा जाउची तेणु द गवर्नर एंड चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज बीन इनवाइटेड निमंत्रित होइछंती टू द पार्टी और टू द फंक्शन. देन एफ 3/4 एबे जो देखिले फ्रैक्शनल रूल जो जिनस देखिले सो 3/4 ऑफ द क्रॉप माने कौन शस्य 3/4 ऑफ द क्रॉप डैश डैमेज्ड बाय द फ्लड बन्या द्वारा क्षतिग्रस्त होई ची. ओके ताले कौन होबो ना 3/4 ऑफ द क्रॉप शस्यर. सो दिस इज अगेन कंसीडर्ड आज सिंगुलर. क्रॉप माको प्लूरल कहि परिबे नाही शस्य. This is considered as singular. You can't count this. So 3/4 of the crop is damaged by the flood. कहले ओके जेहेतु सिंगुलर तापे जदि पास्ट टेंस यूज करी क्षति शस्यर 2/3 क्षतिग्रस्त होइछि कहले ठीक शस्यर 2/3 क्षतिग्रस्त होइथिला कहले मध्य ठीक. बस we need to stick to the correct auxiliary verb as per our noun. Okay, then the bit G, a great deal of money. A great deal of money. ए टिके आगुर देखो रूल देखी थिले a great deal of rule number 9 bit number A. Okay, so these are considered as with the phrases a great deal of money okay was spent for his mother's treatment. Okay, again money is plural. Okay, but a great deal of money this is considered as singular. पहले मनी होची प्लूरल 100% बट अ ग्रेट डील ये जो फ्रेज गुड़ाक लगी गला परे दिस बिकम सिंगुलर. अ होल रेजिमेंट ऑफ वॉलंटियर्स. अ होल रेजिमेंट ऑफ वॉलंटियर्स. होल रेजिमेंट ऑफ वॉलंटियर्स देखो सेंटेंस स्टार्ट है ए आकु ए पर किसी भी अच्छी तुम ट्रांसलेट कला कौन करता गोटे देन द करेस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशन तेणु ये गोटे कथा कहुच्छी गोटे कौन कराई गोटे कंबाइन कर दिया पे हाथी पल आम कौन कहे हाथी पल दले हाथी. सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ होल. ओके सो a whole regiment of volunteers each working here. Okay, bit I, the number of scholarships okay has increased this year. The number of scholarships, scholar वृत्ति मेधा वृत्ति बा छात्र वृत्ति को संख्या again this is third person singular has increased this year ए वर्ष वृद्धि पाइछि. These days mumps dash not at all difficult to cure. So these days mumps is not at all difficult to cure. If the subject of a sentence is a clause, the verb is singular. कौन कहला प्ले? If the subject of the sentence is a clause, the verb is singular. Okay. The subject of the sentence is a clause. पिले clause कौन? Clause होउची गोटे वाक्यर अंश न वाक्यांश. से कहूँ गोटे सेंटेंस रे
सब्जेक्ट जदि गोटे क्लॉज हुए सब्जेक्ट जदि गोटे क्लॉज हुए गोटे ओडिया रे देखो गोटे एग्जांपल दउची पिता मातांको कथा मानिबा भल कथा पिता मातांको कथा मानिबा भल कथा तो जो पिता मातांको कथा मानिबा एटा होची गोटे कोन गोटे क्लॉज जो थिरे गोटे वर्ब अछि आ गोटे सब्जेक्ट अछि ताकू कहा जाए क्लॉज देखो that she is alive is good news that she is alive that she is alive से जीवित अच्छी is good news ओके तो पिले गोटे सेंटेंस रे यू नो गोटे फ्रेज जदि बा गोटे क्लॉज जदि सब्जेक्ट आकार काम करू थाए देखो टोटल एटा गोटे क्लॉज किंतु एटी कौन काम करूची से गोटे सब्जेक्ट आकार रे काम करूची तेणु से जगह रे आमे यू नो सिंगुलर वर्ब को आमे सब सिंगुलर यूज करिबा व्हाट ही डज दिस डेज डज नॉट कंसर्न मी आजिकली से कौन करूची डज नॉट कंसर्न मी व्हाट ही डज दिस डेज सो व्हाट ही डज these days okay does not concern me देखो does not concern me okay so what he does these days आजिकली से जहाँ भी करूची तो ए जिनस एतिकी बास आजिकली से जहाँ भी करूची तो एतिकीटा को this is considered as you know singular बा या पाई मु कौन करी singular verb is singular मत एठी जदि एमती you know सब्जेक्ट जगह जदि गोटे क्लॉज थाए एठी गोटे सब्जेक्टटा कौन देखो पूरा भल रे मैथमेटिकल लिखि दउची एटा गोटे क्लॉज बस हियर एठी सब्जेक्टटा गोटे क्लॉज तेणु ता पाई आमे कौन यूज करिबा सिंगुलर verb यूज करिबा तेणु डज नॉट यूज कली रूल नंबर 12 bit A if two words are linked in the subject with the help of connectives like with, as well as, in addition to, together with, etc., the verb agrees with the first word. देखो जदि दीटा वर्ड को आमे लिंक कले if two words are linked in the subject with the help of connectives or we call them as conjunction कौन either or neither nor and or not only but also so these are the connectives like कौन देखो like with as well as पहले यही फ्रेज गुड़ा को टिके मन रख कारण ये रूलटा हूँ यही फ्रेज गुड़ा को ही नहीं कि कौन as well as okay in addition to in addition to together with okay first of all with I missed this with as well as in addition to together with the verb agrees with the first it लिखी दो देखो the verb agrees with the word with the first word देख बोले बारंबार से पुराना डायलॉग को रिपीट करूँगी ओडिया रे तार माने बुझी पाइले गोटे सेंटेंस रो माने बुझी पाइले ताको ग्रामेटिकली करेक्ट करि परिबो देखो गोटे बढ़िया कथा द टीचर विथ ऑल हर स्टूडेंट्स देखो ओडिया लिखुची शिक्षक निजर समस्त छात्रंक सहित समस्त छात्रंक सहित आसीछंती समस्त छात्रंक सहित आसीछंती सो पिले गोटे सेंटेंस रे व्हेन आई कॉल इन अ सब्जेक्ट समथिंग एज अ सब्जेक्ट when something is spoken about some person that is called subject मु विद्यालय को जाउची total my focus is on mu
or Hari is going to market. My focus, my intention at the moment I speak this sentence, my focus is not at the market. My sentence is Hari, son of his dad. Hari is going to the market. तेणु गोटे सेंटेंस रे आमर फोकस टा जहाँ उपरे थाए that is the subject, and whatever is spoken about the subject that is known as predicate. तो एबे देख शिक्षक निजर समस्त छात्रों सहित आछंती किए आछंती शिक्षक आछंती हाथी घोड़ा सांगरे नेकी आछंती आई डोंट केयर. सो शिक्षक निजर समस्त छात्रों सहित आछंती तेणु देख ये जो इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, बा खाली विथ, बा एज वेल वाज, तो युवाक कौन हुए ना द वर्ब एग्रीज विथ द फर्स्ट वर्ड. फर्स्ट वर्ड किए फर्स्ट वर्ड समस्त छात्र, सेकेंड वर्ड. ओके तेणु ये भर्ब आम क्या सुहेला भाया ओडिया रे शब्दटा कहूना अनुकूल. अनुकूलर भारी नो गोटे आंचलिक भाषा बा समसामयिक भाषा सुहेबा बोली कहती. तेणु देख एठी मु ऑक्सिलरी कौन यूज करी प्रथम वर्ड को मैच है भली बा प्रथम वर्ड को सुइटेबल है भली. सो द टीचर, so I am going to choose the auxiliary for the first word, not for the second word. This is what this rule says. So the teacher, with all her students, with all her students, तो पिले माने तमें भाविल अच्छा सार हेले जड़े 5-6 जन स्टूडेंट बोते समस्ते मिसिकी प्लूरल हो गले ना. मु कहवाक चाहूँगी टीचर विषय सी सांगे हाथी घोड़ा लेकिन आसपर मोर ध्यान ना आसते. सो द टीचर विथ ऑल हर स्टूडेंट्स हैज कम. सो आई एम चूजिंग हैज फॉर द टीचर. आई डोंट केयर फॉर द स्टूडेंट्स ओवर हियर. सो द टीचर विथ ऑल हर स्टूडेंट्स हैज कम. So 100% this is V3, though V1 and V3 are same regarding come. Come, came, come. So present and past participle of come both are same. So the teacher with all her students has come. So I am choosing this has for the first word which is teacher. Okay. So देखो आउ गोटे एग्जांपल देछि. Ravi as well as his friends is responsible for the loss. देखो रवि आज वेल आज पहले आउ गोटे आम फ्रेज नवा कौन 4टा तो फ्रेज हो 1 2 3 4 आज वेल आज. रवि आज वेल आज हिज फ्रेंड्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस. इज रेस्पॉन्सिबल पहले देखो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस. रवि जेतिकी उत्तरदायी ता सांग माने मध्य सेतिकी उत्तरदायी. तेणु ये सांग माने आज वेला आज पर अच्छी ता सांग माने. तेणु मुझे सांग मान पे चिंता करिबिनी. प्रथम वर्ड किए रवि व्हिच इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. तेणु मोर फोकस होची रवि पाखरे फर्स्ट वर्ड पाखरे. सो रवि इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग द ऑक्सिलरी इज. जदि एटा प्लूरल था गोटे आर यूज करथांती. वेरी सिंपल. Population growth in addition to many other problems has badly affected India's growth. Let me read this sentence once again. Listen it carefully, my dear students. Population growth in addition to, so I am using this phrase. Population growth in addition to many other problems. जनसंख्या वृद्धि in addition to अनेक problems सहित जनसंख्या वृद्धि has badly affected India's growth. And the last one, this new fact together with other pieces of evidence proves the prisoner's innocence. Okay, एठी आमे यूज करछे शेषर कोन with. तेनु सब बेले ऑक्सिलरी प्रथम वर्ड पई यूज करिबा जोठी सब्जेक्ट रे एई सब गुडा लागि थेबे जनक सहित आउ जने लाइक रवि as well as with his friends. So I am going to choose singular auxiliary or singular verb for Ravi because my focus is on the first word. Very simple pele. When the words in the subject
आर कनेक्टेड बाय जेते बेले वाक्य रे सब्जेक्ट गुडी को जोग करा जाए बा संयोग करा जाए बाय not only but also, not only but also, neither nor, either or. Well, these are the negative statements, isn't it? Neither nor, either or, either or. And the differ in number and person, the verb agrees with the nearer subject. ओके पे मैंने आउ थे शुण एक्चुअली ये रूलटा टिके बड़ अच्छी तो मु पार्ट पार्ट करके बुझाऊँ बुझा चेष्टा कर व्हेन द वर्ड्स इन द सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो फर्स्ट सेकेंड नीदर नॉर थर्ड ईदर और एंड दे डिफर इन नंबर एंड पर्सन दे डिफर इन नंबर एंड पर्सन जमीती कि फर्स्ट पर्सन नंबर केमती डिफर करिवो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हेले आई फर्स्ट पर्सन प्लूरल हेले वी द वर्ब एग्रीज विथ द नियरर सब्जेक्ट वर्ब सब बेले तार पाखापाखी जे सब्जेक्ट थिबो ताहा सहित एग्री हबो पिले ए टिके आगुर देखो एठी मु कहउतिल ना फर्स्ट वर्ड सहित एग्री हबो एठी कोन कहउची ना वर्ब ता पाखरे जो सब्जेक्ट थिबो ता सहित एग्री हबो देखो देखो सेंटेंस देखो लिखी नॉट ओनली द बॉयज बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स लिखी नॉट ओनली द बॉय केवल बालक टी नुह टी माने गोटे नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर इक्वली गिल्टी गिल्टी देख से कहूँ खाली से पिलाटा नुह ता सांग माने भी सम परिमाण रे दायी तेणु पिले ये गोटे कथा देख एथे से रूल कौन कहूँ कहला गोटे सब्जेक्ट रे आम यही वार्ड गुड़ा जब यूज करवा नॉट ओनली बट ऑल्सो हाँ यूज होती कौटी है देख नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज होती ओके यूज होती तेणु से कौन कहूँ ये ऑक्सिलरी आम क्या यूज करवा अच्छा ये 100% मत लगुच जहाँ भी ऑक्सिलरी यूज हम यही जगह हम ऑक्सिलरी जदि एठी यूज हम यार पाखापाखी किए फ्रेंड्स ना बॉय 100% द वर्ब एग्रीज विथ द सब्जेक्ट नियरर टू इट एठी जो हेल्पिंग वर्ब मु यूज करी ना तार पाखरे किए सब्जेक्ट अच्छी ता पाखरे लिखाई फ्रेंड्स एटा प्लूरल तेणु जदि एटा प्लूरल सब्जेक्टा एठी हेल्पिंग वर्बटा हम प्लूरल तो ये कौन यूज करवा 100% आर यूज करवा okay the friends are so not only the boys but also his friends are equally guilty सेम देखो लिखी the boy or his friends have to repair देखो the boy or his friends have to repair देखो friends plural तापे मु auxiliary यूज करली have okay neither the old man nor his sons are prepared to sell their old house अब देखो लास्ट एग्जांपल टा मु व्हाइट बोर्ड लिखुची either you or he either you sorry either you or he dash created this problem देखो से कहूँ तुम्हें किंबा से क्रिएटेड तो 100% दिस इज इन V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रे अच्छी तेणु टोटाल मो माइंड रे वर्तमान कथा चलला एठी इधर मु हैज यूज करी नले हैव यूज करी प्रेजेंट परफेक्ट सो ईदर यू और ही किंतु गोटे साधारण पिलार मुंड को आसे जे बस ऑक्सिलरीटा जहाँ भी यूज हम यही जगह यूज हम ओके ताले ऑक्सिलरी रो नियरर बा निकटवर्ती जहाँ कहते पिले निकटवर्ती नियरर एठी ऑक्सिलरी रो निकटवर्ती किए ही पिले यूर माने होउची तुमे
आउ यू रो माने भी तुम्हें माने तेणु जनरली वी कंसीडर यू एज प्लूरल किंतु मुझे कौन ऑक्सिलरी यूज करी जोटा ताकू लागिकी अच्छी तार निकटवर्ती तेणु इधर यू और ही हैज क्रिएटेड it satisfies this. So either you or he has created this problem. You need not memorize the rules, you should feel the rules. पिले देखो जहाँ कि आम सब रूल्स पढ़ुने ये सब रूल गुड़ाक सब गोटे जस्टिफिकेशन अच्छी से जस्टिफिकेशनटा कौन से फिल कर दरकार ओके से फिल करें ना ये जो रूलटा एमती लिखाई रूलटा एक्चुअली ठीक कथा एटा जदि फिल करि पारलो जीवन रे केबे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हबोनी। देखो रूल नंबर 13 सम नाउन्स आर मेड अप ऑफ टू सिमिलर पार्ट्स इन अ पेयर लाइक सीजर्स ट्राउजर्स स्पेक्टेकल्स और समवट ग्लासेस एटसेट्रा द वर्ड्स आर ट्रीटेड एज प्लूरल सब्जेक्ट्स एज दे रिक्वायर प्लूरल verbs but a pair of scissors a pair of shoes a pair of trousers etc take a singular verb। पिले सुनो किछि वस्तु अच्छी से गुड़ाक जोड़ारे उपलब्ध बा हलरे आसे जमिति कि आमे केबे चप्पल गोटे भी किणुना आमे हलरे किणु जेबे किणु दीटा किणु एबे देखो कहला सीजर्स कईची देखिथिबो इट्स क्वाइट सिमेट्रिकल बाम पट्टा जमितिया डाहाण पट्टा सेमितिया ए जिनस गुड़ाक पिले एगुड़ाक सबु बेले कौन रहे ना always treated as plural subjects एगुड़ा को सब बेले प्लूरल सब्जेक्ट हिसाब से नि जाए आमे जानीचे बस एक रु अधिक हेले बहुवचन एतिक एक रु अधिक हेले बहु तो ये जिनिस गुड़ाक जोड़ारे अवेलेबल जमीक आम पिंधुचे ट्राउजर्स यू नो हैविंग इक्वल पोर्शंस स्पेक्टेकल्स बा ग्लासेस चषमार दीटा काच तेणु ये सब बेले ए वर्ड गुड़ा को प्लूरल कंसीडर करिवो रूलटा एतिकी सिंपल आउ किछि नै सेतिरे किंतु जदि कहबा अ पेयर ऑफ सीजर्स अ पेयर ऑफ सीजर्स अ पेयर ऑफ शूज अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स दीटा ट्राउजर अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज अ सिंगुलर वर्ब एगुड़ा को सबले सिंगुलर वर्ब हिसाब रे निया जाए। देखो से कहला द सीजर्स आर ओल्ड द सीजर्स the seizures are old ओके कईचिटी कौन पुराना अटे the seizures are old my trousers have been cleaned my trousers have been cleaned ओके my trousers सिंपल कथा एगुड़ा को सब आम प्लूरल हिसाब रे कंसीडर करिबा so my trousers have been cleaned I am using you know present perfect have been cleaned किंतु जदि कहले a pair of shoes शूज रो गोटे जोड़ा पहले बारंबार कहूँ ए रो माने आमे बुझू गोटे हले बा गोटा एक जोड़ा आमे ओडिया को एक जोड़ा एक जोठी आसीगला एक वर्डटा आसीगला दैट बिकम्स द सिंगुलर सो अ पेयर ऑफ शूज वाज लाइंग इन द कॉर्नर सो अ पेयर ऑफ शूज वाज लाइंग पड़ी थिला वाज लाइंग इन द कॉर्नर okay rule number 14 when an adjective is used as a noun representing a class it takes a plural verb जेतेबेले गोटे adjective बा विशेषण को व्यवहार करा जाए कौन पाई गोटे क्लास को रिप्रेजेंट करिबा पाई जेमिति कि मानव जाति हाँ एटा गोटे क्लास So when an adjective is used as a noun representing a class, it takes a plural verb. Kono? The rich have a lot of responsibility towards the poor. धनी लोकंकर अनेक दायित्व रही थाए गरीब मानंक प्रति। देखो वाक्यटा को केते बढ़िया लिखा है
The rich, a lot of responsibility, a lot of responsibility towards the poor, पिले मु कहबी I'm a rich man, he is a rich man, he is a rich man. Man is the noun. How is the noun? He is rich, so rich is the adjective. ओके तेणु कौन करागला गोटे एडजेक्टिव को गोटे नाउन हिसाब से जिते बड़े व्यवहार करा जाए देखुन द रिच धनी माने आम एक्चुअली कहू धनी लोक हाँ किंतु धनी माने जिते बड़े यू नो एडजेक्टिव गुड़ा को जिते बड़े आम नाउन हिसाब से जिते बड़े आम व्यवहार करू ओके इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. So the rich, सेम देखो poor, मु कहबी ना poor boy. So how is the boy? Is poor. So poor is the adjective. Okay. जते बेले करा जाए सेते बेले हमें कौन करिबा verb टाकू plural form रे नबा simply. विशेषण गुड़ा को जते बेले आमे विशेष्य हिसाब रे बा नाउन हिसाब रे यूज करिबा सेते बेले आमे ऑक्सिलरी बा सहायक क्रिया को प्लूरल फॉर्म रे नबा सेमती आउट देख लिखी द ब्लाइंड नीड एटा गोटे जाति बा गोटे समूह को बुझेला तेणु द ब्लाइंड नीड एस्कॉर्ट्स टू क्रॉस अ रोड. व्हाट इज रूल नंबर 15? सी व्हेन द प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट और फॉर सम collective unit it requires a singular verb. एठी भी रूल टा टिके कॉम्प्लिकेटेड आउ थरे पढु सुनो. when the plural noun is a proper name for some single object जेते बेले गोटे प्लूरल नाउन टा गोटे सिंगल सब्जेक्ट पाई गोटे प्रॉपर नेम हे थाए प्रॉपर नेम फॉर सम कलेक्टिव यूनिट इट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब सेते बेले वर्ब टा सिंगुलर लागे. Gulliver's Travels was written by Jonathan Swift. Okay, Gulliver's Travels. It's a plural form, plural noun. किंतु इटा कौन गोटे proper noun. Okay, it's a proper name for a single subject, for a single object, or for some collective unit. बा जिते बड़े गोटे कलेक्टिव यूनिट हिसाब से निया जाए सेते बड़े आमे सेठी कौन करिबा सिंगुलर वर्ब यूज करिबा. देखो सेकंड देछि द यूनाइटेड ए एग्जांपल ता देखो भल रे बुझी पारिबो. द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ पावरफुल कंट्री. गोटे कथा देख खाली था मनकर स्टेट्स राज्य गुड़िक जदि था खाली स्टेट्स आम लिखि आर दोज स्टेट्स आर ब्यूटीफुल से राज्य गुड़िक बहुत सुंदर सेमती था किंतु ये कौन है देख ना जिते बड़े प्लूरल नाउन नि जाऊँगी एटू देख ये आम शुणुचे प्लूरल नाउन ये गोटे कथा मुझे कहीदिए पे आम जाचे द टाकू सिंगुलर नाउन पाई व्यवहार करा जाई पारिबो दर माने होची स्पेसिफिक आ द टाकू प्लूरल नाउन पाई मध्य व्यवहार करा जाई पारिबो. सो द यूनाइटेड स्टेट्स ओके तेणु यूनाइटेड स्टेट्स बोले ए जिनसटा होची गोटिए वी कॉल दिस आज यूएस माने यूनाइटेड states एकत्रित होइथिबा. So United States now this becomes singular. So the United States is a powerful country. Okay. तेणु सामने द देखिकी सबु बेले एठी सिंगुलर जे यूज करिबो सेटा भूल. ओके गोटे सेंटेंस देख द बॉयज आर गिल्टी. द बॉयज से ही स्पेसिफिक पिला माने दुष्ट अटंती द बॉयज आर आम यूज करिबा
ओके किंतु ए क्षेत्र में कौन है ना यहाँ गोटे कलेक्टिव नेमटा ओके द प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट और फॉर सम कलेक्टिव यूनिट फॉर यहाँ गोटे कलेक्टिव यूनिट हिसाब से एक गोटे कलेक्टिव यूनिट हिसाब से यहाँ एक तेणु तापे आम नो सिंगुलर ऑक्सिलरी यूज करेचे yes so now we reached the last rule of subject verb agreement, that is rule number 16. After this we shall be solving some activity 3. Okay, after that this chapter will be covered. The verb in a relative clause is singular or plural depending on the number of person of the antecedent in the of the relative pronoun. Okay, the verb in a relative clause गोटे relative clause रे verb टा is a singular or plural depending सेटा कहाँ पर depend करे depending on the number and person of the antecedent of the relative pronoun. देखो देखिला it is you गोटे relative clause it is you who have wronged me, who have wronged me, जे मते भूल रास्ता रे नहीं छी. It is you who have wronged me. आउट देखो it is he who has torn my book. It is he who has torn my book. Who has torn T-O-R-N चिरी पापिले एटा V3 फॉर्म अच्छी हु हैज टर्न माय बुक पहले ओडिया रे ए दीटार एक्जाक्ट मीनिंग जदि कहबी इट इज ही से होउची से लोक से होउची सेई लोक जे मो बही चिरी छी प्रेजेंट परफेक्ट इट इज यू तुमे होउच सेई लोक बा तुमे होउच सेई जे मते रॉन्ग हु हैज रॉन्ग्ड मी जहा जो मोर भूल हेची बा जे मते भूल रास्ता रे नेची तेणु यही सेंटेंस गुड़ाक देख कौन कहला द वर्ब इन ए रिलेटिव क्लॉज इज ए सिंगुलर और प्लूरल देख ये आम यूज करुचे हैव एठी यूज करुचे हैज से तो सही कथा कहूँ गोटे रिलेटिव क्लॉज रे वर्बटा सिंगुलर हब किंबा प्लूरल हब देख लिखी ना सिंगुलर और प्लूरल कहा ऊपर डिपेंड करुची डिपेंडिंग ऑन द नंबर एंड पर्सन ऑफ द एंटेसिडेंट ओके एंटेसिडेंट रो कौन नंबर आउ पर्सन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन ता ऊपर डिपेंड करुची ओके एठी रहिला ही तेणु ही पाई आमे यूज कले हैज यू पाई आमे यूज कले हैव सो इन दिस वे वी फिनिश्ड 16 rules and some of the rules have sub rules एक्टिविटी 3 तो किसी नहीं पहले सही कथा टोटाल आम पढ़ुचे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बस सब्जेक्ट सिंगुलर ना प्लूरल गोटे धाड़ी रे कहले सब्जेक्टा सिंगुलर ना प्लूरल सेंटेंस रे जो फॉर्म रे भी सब्जेक्ट अच्छी सेतिकी खाली चिन्हबार अच्छी सब्जेक्ट जदि सिंगुलर तापाई यूज करिबा सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट जदि प्लूरल तापाई यूज करिबा प्लूरल वर्ब एतिकी कथा को डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो रे वाक्यटा केते जटिल बा कॉम्प्लेक्स हो पारे से 16टा रूल से देछि ओके सो नाउ सी द एक्टिविटी 3 what he says about me does not affect me what he says about me देखो पिले लिखिला फर्स्ट बिटा से मो बाबद रे जहा कहे एई कथाटा टिके आगुरु पढ़ले एई सब कथा गुडा को सब बेले सिंगुलर सो व्हाट ही सेज अबाउट मी से मो बाबद रे जहा भी कहे पिले टोटाल आकु धरो एक वचन सिंगुलर so does not affect me do not affect me or does not affect me 100% for singular I'll use does not affect me
very simple rule. Ram as well as his friends, Ram as well as his friends dash to play football. देखो Ram as well as his friends dash. देखो ये टिके आगुरु आम ये देखिले रूल नंबर 12 ओके सब बेले कहला यही जो कनेक्टिव जब यूज करथिबा विथ एज वेल एज इन एडिशन टू टुगेदर विथ द वर्ब एग्रीज विथ द फर्स्ट वर्ड एटी कौन वर्ब नेबी ए सांग मानक पई नेबिनी नेबी प्रथम वर्ड राम पई सो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स लाइक्स टू प्ले फुटबॉल पिले थर्ड पर्सन सिंगुलर पई सिंपल प्रेजेंट लाइक रहला कोन लाइक्स टू प्ले फुटबॉल whatever. Neither Rose nor Jasmine dash available in the market. Rose नुहे कि Jasmine भी नुहे एटा नुहे कि neither nor 100% I will take this singular. So neither Rose nor Jasmine was available in the market. Then beat number D serially पिले गोटे गोटे करिबा a pair of spectacles. Perhaps I told this for the fourth time. A pair गोटे जोड़ा आसीगला माने आखि बुझिकी एटा को सिंगुलर कंसीडर करिवो सो a pair of spectacles दीटा ऑप्शन अछि गोटे अछि वेयर गोटे अछि was so I am going to choose was. A pair of spectacles was lying on the bed. Then bit E देखो लिखी the rich lives or live in affluence. The rich now धनी लोक माने now this adjective represents a class. समाज रे विभिन्न जाति थांती ना विभिन्न स्तर धनी गरीब मध्यवित्त निम्न मध्यवित्त ये सब जाति को थांती the rich ए एडजेक्टिव टा गोटे जाति बा गोटे क्लास को रिप्रेजेंट करूची माय डियर स्टूडेंट्स सो द रिच लिव्स और लिव इन एफ्लुएंस लिव्स मतलब इथरा में चूज करबा लिव्स ना लिव इन एफ्लुएंस ओके सो 100% जेहेतु एटा गोटे जाति को वर्तमान बुझेला सब बेलेटा प्लूरल फॉर्म रे निया जाए सो आई एम गोइंग टू चूज लिव रिच लिव इन एफ्लुएंस द सेंटर ब्यूटी टेल्स वाज और वेर रिटन बाय चॉसर सो द अगेन दिस इज अ कलेक्टिव गोटे कलेक्टिव नाउन सो द सेंटर ब्यूटी टेल्स वाज रिटन बाय चॉसर G 6 weeks is a long vacation for students or 6 weeks are a long vacation for students पहले गोटे amount 2 kg 3 kg 5 kgs 5 टा को केबे भी प्लूरल भाबीबनी ऑलरेडी मु बुझी सारी छी the magnitude of the number may be very large 1 trillion it may be the magnitude may be very large but in English grammar this is a singular quantity गोटे जिनस एटा एक so 6 weeks is a long vacation 6 सप्ताह छुआंक पाई बहुत लंबा छुट्टी so 6 weeks is a long vacation for students bit H okay your trousers एटिके आगुरु ए ट्राउजर ऊपर ही गोटे एग्जांपल एट लिखिथिले दिस इज कंसीडर्ड एज प्लूरल सो your trousers are torn I bit I am young and strong I am young and strong aren't or aren't मु बहुत माने जो माने कौन बहुत युवक एवं बलुआ ताले को मु बलुआ नुहे कि सो कौन लिखा आमंट मु नुहे कि ये देख दुईटा ऑप्शन देछि गोटे लिखी आमंट आ गोटे लिखी आरंट देन बीट जे इट इज यू हु डैश इनसल्टेड मी देखो यही टाइप गोटे सेंटेंस एग्जैक्टली लिखी थे ये तुम हो जिसने मुझे अपमानित किया
so it is you, it is you. A relative clause रे देखो लिखा है जी it is you, तो 100% I am going to choose have. So it is you who have insulted me, it is you, वो तुम थे जिसने मुझे अपमानित किया है. It is you who have insulted. पहले एरा सब डायरेक्ट बहिरो एग्जांपल गुड़ा दे दीजिए. It is you who have insulted me. So don't memorize the rules, rather feel the rules. रूल गुड़ा को फील करो पहले. बहुत समय यू नो वेरी तुमको कौन हुए पाखापाखी उत्तर गुड़ाक तुमको दि जाए, तुमको लगे नो 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 यहीटा नुह सहीटा ठीक, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस. से जो सूक्ष्म प्रभेदटा अच्छी से तुम जानवा दरकार. दे आर डैश पीपल वेटिंग टू सी यू, दे आर डैश पीपल वेटिंग टू सी यू. सेठी लोक माने अछंती तुमको अपेक्षा करिसंती. तेणु पीपल इज 100% प्लूरल. एटा यार पोस्टमार्टम करवा दरकार ना ये क्वेश्चन रो. सो देयर आर पीपल वेटिंग फॉर यू, वहाँ पे लोग हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. सो देयर आर पीपल वेटिंग टू सी यू. आवर्स, आवर्स इज और डैश अ ग्रेट नेशन. ओके, सो आवर्स इज अ ग्रेट नेशन. आम वालाटा हूँ गोटे बहुत बड़ जाति, गोटे ग्रेट नेशन, गोटे बहुत बड़ राष्ट्र. बोले आवर्स लिखा है नो पोजेसिव प्रोनाउन आवर. दिस इज आवर नेशन, दिस नेशन इज आवर्स. आवर, आवर टा पोजेसिव एडजेक्टिव, बट आवर्स इज पोजेसिव प्रोनाउन. कौटी पढ़ते एटा प्रोनाउन टेबल रे सब जगह अच्छी. ओके, so ours is a great nation, isn't it? यह नुहे कि the police has or have a difficult job. Very simple question. यही गुड़ाक प्लूरल बोली बही रे लिखी देइची. Okay, so the police have a difficult job. D bit, a lot of cattle, a lot of cattle was or were grazing. Okay, in the field. A lot of cattle, अनेक गुड़िए गृहपालित पशु. A lot of, this is considered as plural. थोड़ा भाभी की देखो ना ओडिया रे थोड़ा ट्रांसलेशन करके देखो. A lot of cattle was grazing in the field. पड़िया रे चरुथिले अनेक गुड़िए, plural. The E bit, the youth is or are not so sincere. Okay, the youth are not so sincere. देखो the youth are not so sincere. Again, youth. This represents a class. गोटे जाति समाजर गोटे गोटे स्तर बा गोटे समूह को बुझाऊँगी. यही गुड़ाक सब बेले आम प्लूरल नौ, कारण समाज गोटे छोटिया जिनस नुह, सोसाइटी गोटे बड़ जिनस, तार गोटे पार्ट. युवक गोष्ठी, प्रौढ़ गोटे गोष्ठी, अल्प वयस्क गोटे गोष्ठी. सो दीज आर द प्लूरल्स. सो द यूथ आर नॉट सो सिंसियर. बिट एफ, द यूथ वाज और वेयर मोर सीरियस दैन हिज अंकल, दैन हिज अंकल. देखो यूज करिचे हिज, ऑब्वियसली हिज अ मेल और रिप्रेजेंट्स मैस्कुलाइन पुल्लिंग जहाँ को आम कहूँ. तेणु द यूथ वाज मोर सीरियस दैन हिज अंकल. इल न्यूज, इल न्यूज खराब खबर गुड़ाक जल्दी व्यापी जाए. ओडिया रे कथाटा अच्छी देखो लिखला इल न्यूज ट्रावेल और ट्रावेल्स फास्ट. इल न्यूज ट्रावेल्स फास्ट. तो ये रूलटा आम कौटी देखिले रूल नंबर 10 पिले स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, मिसल्स, मॉम्प्स, एडवाइस, इनफॉरमेशन, ज्वेलरी, सीनरी एटसेट्रा आर अनकाउंटेबल नाउन्स. आमे एमान को गणी पारिबा नाही, बट देयर इज अ ट्विस्ट. आमे एमान को गणी पारिबा नाही. दे टेक सिंगुलर वर्ब्स. सेमानक पई सिंगुलर वर्ब यूज करा जाए. एबे सुनो
क्वेश्चन को आस जी को इल न्यूज भूल खबर बा खराब खबर जल्दी व्यापी जाए तेणु इल न्यूज दे टेक सिंगुलर वर्ब वेरी क्लियरली लिखी देछि सो इल न्यूज ट्रैवल्स फास्ट ट्रैवल्स जेहेतु थर्ड पर्सन सिंगुलर आई एम यूजिंग this one travels so ill news travels fast bit h mumps is or are very unpleasant so mumps is very unpleasant again देखो mumps भी हमर सेथिरे आछि रोल नंबर 10 रे ओके तेणु तापे आम कौन यूज करवा सिंगुलर वर्ब बस जो जो स्पेसिफिक वर्ड गुड़ाक देनी बोले रूल रे से स्पेसिफिक वर्ड गुड़ाक से स्पेसिफिक नाउन गुड़ाक बा से स्पेसिफिक फ्रेज गुड़ाक तुमको मन रखा पड़ो से 40टा कि 50टा कहनी बैक्टेरिया ऑफ द हार्मफुल काइंड कॉज और कॉजेस डिजीजेस ओके सो क्षतिकारक प्रजातिर बैक्टेरिया कौन करे रोग सृष्टि करे सो बैक्टेरिया ऑफ द हार्मफुल diseases okay of the harmful kind cause diseases रोग सृष्टि करे then j there is or are a pair of spectacles on that shelf again देखो सही चारटा कथा तो गोटे थिला spectacles गोटे थिला trousers गोटे थिला scissors so they are dash a pair of spectacles a pair of एक जोड़ा अच्छी आम कहू ना सेठी एक जोड़ा चप्पल एक जोड़ा स्पेक्टाकल अच्छी सो द लास्ट वन गोइंग टू बी देयर इज अ पेयर ऑफ स्पेक्टाकल्स ऑन द सेल्फ ओके so in this way we finished your chapter 3 that is subject verb agreement.